So as we are heading towards this mock test number 1, risk and estate planning. So let's start it, right? So guys, question number 1 is, when someone will be related to others as a full blood legal heir? A option. Please read the question carefully and then give the answer. Or you can give the answer in the chat box also. So when someone be related with others with a full blood heir, and somebody said that answer number A is right. If you remember, I told you that when someone is full blood, and this question is basically from estate planning. So when somebody is having full blood relations, when they have common parents. When I say common parents, means that if anyone has both parents, let's say father and mother, let's say if two siblings having same parents, father and mother, they are basically rated as a full blood legal heirs, because we understood that when interstate properties are distributed, then this is very, very important. Full blood are always preferred than half blood, right? So answer number A is absolutely correct, that when then anybody who is coming from the common parents will be related to full blood. If you remember, I took an example also. I took an example from the Bollywood, wherein मैंने आपको सनी देओल और बॉबी देओल का एग्जांपल दिया था कि दे आर विद फुल ब्लड रिलेशन, और मैंने आपको सनी देओल और ईशा देओल का एग्जांपल दिया था। ये कैसे रिलेटेड है? They are related. Half blood. Yes, they are related half blood. Why? Because their mothers are different. So if you're coming with different mothers but with same father, you will be basically half blood related, right? So full blood relation, जहाँ पे common parents हैं, both father and mothers are same, and half blood means when basically the siblings are coming from different wives but same father, right? Question number 2. Please give me the answer. Priya, what will the answer of this question? Personal law will be applicable on property owned by Hindus who married under Special Marriage Act. Sir, Indian Succession Act because he entered the Asian marriage. Fantastic. The answer number B is absolutely correct. If anyone, I took an example. Let's say if anybody marries between inter-religion, let's say Hindu marrying with Muslim or Muslim marrying with Hindu, then in this case, their succession will not be as per the Hindu Succession Act or Mohammedan law. That will be applied. Indian Succession Act 1925 will be applicable on the marriages, inter-religious marriages, which are basically covered under Special Marriage Act 1954. Absolutely correct. Who will be the half-blood heirs? When they are descended from a common ancestor but by the different wives. Just take an example in the case of Isha Deol and Sunny Deol. They are basically rated as half-blood because their mothers are different but with a common male ancestor. Okay. Now this question, when someone will be related to others as uterine blood heirs, you might have this type of small questions in exams, right? You should have an understanding of all these. So we understood the full blood, we understood the half blood. What is uterine blood? Option number B. When they are descended from a common ancestress but by different husbands. Absolutely correct. यानी इस केस में आंसर नंबर 20 इसलिए राइट है, बिकॉज यूटेरिन ब्लड वो कहलाता है जहां पे wives are same. I mean, they are coming from same mother, but their fathers are different. So we have full blood, we have half blood, and we have uterine blood. What is a interstate succession? Tell me. So your paper is basically divided into 50-50%. 50% from estate planning and 50% from insurance. And we have also prepared the mock test like this.
right? 50% question from estate and 50% from risk, that is insurance. So what is interstate succession? Ankit? No succession planning at all. मतलब will नहीं लिखा जिसने. What will be the answer in this case? C. Yes, absolutely. This is the simplest question it might be asked in the exam. What is interstate succession? Interstate succession is nothing but somebody who does not plan his succession. In other words, you can say if somebody does not write a will or does not make a trust or does not decide that after his death how the property will be distributed and he dies like on like this only, that doesn't write a will, doesn't make a trust, कोई succession planning नहीं किया, तो वो कहलाएगा interstate succession, right? Absolutely correct. What are the type of domiciles? Domicile by choice होता है, domicile by origin होता है, domicile by operation of law होता है, या all of the above होगा? कितने तरह के domiciles होते हैं? The domicile, all of the above is the answer. Why? I told you that domicile by choice means that if somebody wants to have a domicile of any other country, right, he has to basically undergo the regulations and the requirement and he can opt for the domicile. Domicile by origin का मतलब क्या होता है? जहां जो आदमी पैदा हुआ है, somebody who is born, वो domicile by origin होता है, right? If I am basically born in Rajasthan and Jaipur city, so I have a domicile of Jaipur. And domicile by operation of law means that sometimes what happens that my children domicile is dependent on my domicile, right? My spouse domicile might be dependent on my domicile. तो कहने का मतलब क्या है? When somebody's domicile is dependent on some other person, let's say spouse का domicile depend करेगा husband पे या children का domicile depend करेगा कि father कहाँ born हुए, तो ये basically operation of law में law के हिसाब से domicile decide होता है. But let's all of these domiciles are type of domicile. Another question is, can a person have more than one domicile? क्या एक आदमी को एक से ज्यादा domicile हो सकता है? See, at one time a person cannot have two domicile, right? As per succession, एक आदमी दो domicile नहीं रखेगा, right? Now what is the testamentary succession? Option number A, when person dies with a will. Anybody else? अभी आप सबको पता है इंटरस्टेट सक्सेशन क्या होता है? somebody is not writing will, may not making a trust, ऐसे ही बिना सक्सेशन प्लानिंग की दुनिया से चला गया तो वो इंटरस्टेट सक्सेशन कहलाता है. तो व्हाट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन? will लिख के गया. Yes, so answer number is absolutely correct. Is succession by a testament or will made during one's lifetime. Try to understand, if somebody is making succession planning during his lifetime by writing a will is called testamentary succession. Person who writes a will is called testator. Testator, sir. ठीक है, सब बिल्कुल समझ में आ गया कि जो आदमी will लिखेगा वो कहलाएगा testator, right? Executor is someone who basically has a responsibility of executing the will post the death of the testator, right? Witness, the two witness has to be there on the will. वो witness होता है. Successor का मतलब होता है जिसको property मिलने वाला है. Guys, who can write a will in India? Option C. C, sir. Above 21 years. Yes, Sound very mind. good. Somebody who's 21 years with sound mind can write a will in India, right? And practically also you must know all these things so you can tell your clients कि साहब ठीक है 18 साल के हो will नहीं लिख सकते हो, 21 साल के साउंड माइंड के साथ will लिख सकते हो. What is a true about codicil except? अब एक्सेप्ट लिखा हो तो इसका मतलब ये समझना कि यू हैव टू फाइंड आउट द रॉन्ग ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू. C. बोलो भाई, पढ़ो पहले आराम से, जल्दी में क्यों? डोंट बी इन हरी. D. से डॉक्यूमेंट जो मैंने समझाया था कि अगर आप विल में कोई भी चेंजेस करोगे, इफ यू हैव एनी चेंजेस इन द विल, दैट बेसिकली डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉडिसिल. अभी मैंने आपको कभी भी ये पढ़ाया था क्या कि जो विटनेस आपके ओरिजिनल विल में है, सेम विटनेस आपको वहां पे चाहिए? डिड आई टीच यू दिस? यस और नो? बोला है क्या आपको कभी? No, sir. आंसर डी इज राइट.
Yes. You don't need to be having the same witness which you had in the will, and then when you have amendment in the will, you need to have the same witness. जरूरत नहीं है, कॉर्डिसिल में कोई और विटनेस भी ले सकते हो आप, right? An Yes, sir. executor appointed may be. C. Option number B. Who can be an executor, guys? C ऑप्शन सर, बेनिफिशियरी तो नहीं होगा. आपने मुझसे पूछा भी था ये कि सर एग्जीक्यूटर क्या बेनिफिशियरी हो सकता है क्या? मैंने बोला था एग्जीक्यूटरी बिल्कुल बेनिफिशियरी हो Benefit हो सकता है, सकता है. और थर्ड पर्सन तो हो ही सकता है. सो आंसर इज बी, एग्जीक्यूटरी कैन नॉट बी विटनेस. ऑलवेज रिमेंबर, जिसको आपने जिम्मेदारी दी है कि आप मेरी विल में एग्जीक्यूटर बनोगे, या यू विल एग्जीक्यूट माय विल आफ्टर द डेथ and will ensure the property distribution to my legal heirs, he cannot be witness. Is it clear to all of you guys? Even if there is no question in your exam, you must be clear with all these facts. Are we on the same page? Are you following? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन बताओ. What are the criteria to appoint an executor? Option number D. 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 D, sir. D सर. हाँ, D, all of the above. All of the yes, above. बिल्कुल Yes, सिंपल sir. सीधा सीधा लग रहा है. 18 साल से ऊपर, साउंड माइंड का होना चाहिए. अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर अगर डिनाई कर दे, एग्जीक्यूटर 2 रखो, क्योंकि अगर somebody basically dies, one executor dies, तो you have two second executor who can execute your will, right? ठीक है ना? और मान लीजिए अगर पहला मर्द की डेथ हो जाती है तो दूसरा उसको कर लेगा. और अभी भी मैंने बताया कि एग्जीक्यूटर कैन बी बेनिफिशियरी और थर्ड पर्सन ऑल्सो. एग्जीक्यूटर कैन बी हायर्ड ऑल्सो, राइट? एक्सपीडिशन और एंगेज इन एक्चुअल वारफेयर, ऐसी बिल जहां पे मैंने आपको समझाया था कि somebody is basically at the Army, war Navy front, war Army front and में, Navy. yes, आर्मी में मैंने बताया था कि मान लीजिए there is a fight between two nations and army people basically are dying, and if somebody at this situation want to make a oral will, not a written will, मरते हुए अपने साथी को बोल दिया कि somebody has told कि भैया मेरी फैमिली का प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो, कैसे, कौन सी विल कहलाएगी ये? Privilege will. Yes, Privilege- this will be privilege will. privileged will. It will be a privileged will which will be in oral, right? Oral will. Sir, option A. A. I have gifted a property to Mr. Heath Chadda. There is Heath is also there. He is a new student of 5 lakh rupees. और मैंने हीथ को ये भी बोला कि हीथ, you are responsible of this 6 lakh rupees of liability towards me. So this, in this case, where Heath is getting a gift of 5 lakh rupees and having a liability of 6 lakh rupees, that gift is basically onerous gift because the liability is exceeding on the benefit. What is the specification of community property excluding? अरे community property क्या होता है? Option A. A होगी. हमसे पढ़ो. एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? कौन सा नहीं B, है? B, B. B, B. हमेशा गलती क्या करोगे? एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, लीस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली. Please try to understand. Your option, choosing option will be different if if you pay attention all these words: least likely, excluding, except, most likely. Excluding का मतलब क्या हुआ? Something which is not a specification of community property. Now tell me the answer. B. B होगा. Yes. What is community property? Any asset which is basically acquired after the marriage by both of the people and both of the spouses. So acquired by either spouse. किसी ने भी उसको इकट्ठा किया हो, doesn't matter, right? और दूसरा belongs to both partners. दोनों का है, किसी एक का थोड़ी है, ठीक है? And it designated as married individual asset. So answer number B is right. What is inheritance? Ancestry. Ancestry. Yeah. Ancestral property which come into inheritance. It is inheritance, right? Do we have any tax in India on inheritance
or a property coming through a will to anyone? No, No. sir. No, sir. Yes. Please understand this. In India, we do not have any tax property coming in inheritance or coming through a will. Present interest in property refers what? Sir, all of the above? Yes, all of the above. ठीक है ना? करंट इनकम आ रही हो, आज करंट ऑनरशिप हो, ठीक है, अभी अभी यूज कर सकता हूँ प्रॉपर्टी को, दैट इज प्रेजेंट इंटरेस्ट. Which type of assets do not require probate? I told you very Life clearly. insurance. Life insurance. सोचो, Life insurance. Life insurance. The life insurance. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी लाइफ Contract, इंश्योरेंस life ही है, insurance. राइट? इसका आंसर C. वैसे सी होगा, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइफ इंश्योरेंस इटसेल्फ ए कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए ध्यान रखो कि हिंदुस्तान में दो ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं, पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस. इनमें जो नॉमिनी बन गया, he will be beneficiary nominee. Please try to understand there is a difference between beneficiary nominee and simple nominee. And what is the difference? In beneficiary nominee, whosoever is nominee, the money will be there with the nominee and nobody can challenge, and this money cannot be challenged by other legal heirs. Otherwise, in other things, the nominee is just a trustee. Other legal heirs can come and ask this nominee to distribute the property accordingly. Are you absolutely fine with this? Yes, sir. तो पीपीएफ में नॉमिनी नहीं को पैसा मिलेगा और लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनी को पैसा मिलेगा. एंड आराम से आंसर दो, कोई जल्दी नहीं. रीड द क्वेश्चन केयरफुली, देन गिव मी द आंसर. टेक योर टाइम. Sir, D, pure risk and risk transfer. Pure risk and risk transfer. D. D option. What is pure risk? सर ऑप्शन डी. Sir, pure risk में sir सर प्योर रिस्क वो रिस्क होती है जिसके अंदर हमें प्रॉफिटेरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती. Yes. Either loss or no loss. Right? Can you know, या तो लॉस होगा या नहीं होगा. Right? Like if you play a casino, you can have a loss or you can have a profit also. Is it a pure risk? Speculative risk. It is a speculative risk. But somebody's death, losing your motorcycle, you know, somebody basically, there is a theft of your motorcycle, a theft of any vehicle, they are basically pure risk, either loss or no loss. Right? Dusra, what is risk transfer? If you transfer your risk to any insurance company, buying the insurance policy is called risk transfer. Risk What transfer. this is what she is doing. She is purchasing a life insurance. It means that she is transferring the risk to insurance company. That is risk transfer. I hope this is absolutely clear to all of you. Yes, sir. आगे Yes, चलिए. sir. ये क्वेश्चन का जवाब भी वही दे सकता है जिसने एफपीएस बेग बुक की रीडिंग मारी. Sir, B, collect information to identify risk. कौन बोला? Heath here. सुजीत? Heath. ईत? Yes, sir. अरे वाह यार, आंसर तो तुमने बिल्कुल सही दिया. ठीक. सेकंड स्टेप क्या है रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस प्लानिंग का? दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? C. Identify the Identify risk. the risk management goal. रिस्क मैनेजमेंट गोल. सेकंड क्या है? Collect Collecting. information. थर्ड क्या होगा? Collect information. Review. एनालाइजिंग. Analyze. चौथा क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन. Implementation. कंस्ट्रक्ट भाई, इम्प्लीमेंटेशन तो बाद में करोगे. पांचवा क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन. और सिक्स क्या हो गया? मॉनिटरिंग. बस इतना ही तो याद रखना है. अरे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, फिर कंस्ट्रक्ट किया, फिर इंप्लीमेंट किया, फिर मॉनिटर कर लिया. ये लो भाई. अब कोई भी पूछे थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, फर्स्ट क्या है, बता पाओगे? Yes, sir. बोलिए.
तो रटने की आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू मग इट अप, जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप रिस्क मैनेजमेंट गोल आइडेंटिफाई करोगे, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, फिर उन्हें एनालाइज करोगे, फिर कंस्ट्रक्ट करोगे प्लान को, फिर इंप्लीमेंट करोगे एंड देन यू मॉनिटर इट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो, कम टू रोहित। सर डी टॉप अप पॉलिसी। The top up policy. तो यार तुम तो खटाखट आंसर दे रहे हो, 2 मिनट रुको। तो क्या बोला आप सबने? तो टॉप अप पॉलिसी डी। समझाऊं या समझ गए? Top up policy. वेरी गुड। सो यू ऑल नो दैट, देखिए ये मैंने किया भी है, मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसके बहुत फायदे हैं। रोहित हैज वन हेल्थ पॉलिसी इन हिज नेम बट फील्स दैट कवर इज नॉट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिंग कवर टू एग्जिस्टिंग प्लान। So I have a Star Health insurance policy with me, which I bought in 2012 when I was leaving my job of Midla Sun Life Mutual Fund. So I left in July 9, 2012, and I bought this policy in June 2012 because I knew that my insurance cover will not be there because I'm leaving the company. I bought it. And 2017, I realized that this 5 lakh rupees of insurance is not adequate. Now I want to cover more to my family because we are now 4 members, right? Because 2016 my daughter was born. So अगर आपको existing insurance में के साथ कम cost में if you want to have more coverage, always go for top up policy. अब now how top up policy works, that you need to understand. 5 lakh rupees का मेरा Star Health है, I took 10 lakh rupees as a top up from Apollo. So what will happen? That for Apollo, this 5 lakh rupees is as a deductible. It means what? If any claim comes, the first 5 lakh rupees will be borne by whom? Star Health. Star Health. बोलो ना यार, सन्नाटा के खा गया। Star Health. स्टार हेल्थ। ऊपर का कौन देगा? Apollo. चाहे Apollo. स्टार हेल्थ दे, चाहे मैं अपनी जेब से दूं, अपोलो को कोई मतलब नहीं। 5 लाख के ऊपर से जो भी अमाउंट होगा वहां से अपोलो का कवरेज चालू होगा। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि जो कॉस्ट मुझे 5 लाख रुपए पे देना पड़ रहा है स्टार हेल्थ को, उससे 60% पैसा मुझे 10 लाख के लिए अपोलो को देना पड़ रहा है, क्योंकि पहली जो प्राइमरी रिस्क है वो इस कवरिंग स्टार हेल्थ। Star Health. ठीक है, आगे चलो। C या D में से। Very simple question. General insurance include cover for family Sir, members. option D. Homeowners insurance does not include medical payment. Homeowners insurance is nothing but it's a property insurance. Does not include medical payment to other claim expense and damage to property of others. अरे भाई, it includes. पढ़ाया था ना मैंने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का, वीडियो जाके देखो। मैंने बताया था कि फॉर बिकॉज ऑफ एनी प्रॉपर्टी डैमेज, इफ एनीथिंग हैपेंस टू द नेबर, हिज प्रॉपर्टी, एनी मेडिकल लायबिलिटी अराइजेस ऑन योर शोल्डर, दिस विल बी कवर्ड इनटू प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, राइट? इसने तो लिखा डज नॉट, तो ये तो गलत है ना। हमें तो मोस्ट लाइकली करेक्ट ढूंढना है। अब बताओ कौन सा गलत साबित करूं, कौन सा सही लग रहा है? सर A और C लग रहा है सर। ए सही लग रहा है कौन सर। बोल रहा है? प्रतीक जैन और अंकित। ए सही लग एक रहा है। छोटा सा शब्द नहीं ढूंढा, सब सुना आपने। वो तो You wrong did है। not see this word. Land. अगर आपने ये Okay. वर्ड देखा होता तो ये बिल्कुल गलत हो गया होता। Can a property insurance give you coverage against land? No sir. No. No. No, sir. No This sir. is absolutely wrong. अब बोलो कौन सा गलत साबित करूं? D गलत। डी गलत, डी तो वैसे डी गलत है। ये गलत है, पूछो क्यों? मैंने समझाया था कि Beyond. अगर somebody is basically let's say किसी घर में आग लग जाती है और वो किसी दूसरे घर में जाके रहता है, राइट? तो ये बेसिकली जो एक्सपेंसेस होंगे ये भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं। यहाँ पे जो रेंट देगा, इसने क्या लिखा? डज नॉट इंक्लूड। बाकी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि बियॉन्ड द पॉइंट, जब तक वो ऑक्यूपाइड होने के लायक नहीं होती है प्रॉपर्टी, इस पॉइंट तक अगर कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके, हु विल कवर? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर और नॉट कवर? कवर। ये लो, आंसर सी इज राइट। राइट।
अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ डी कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड At the और एट time, द टाइम ऑफ डेथ, at the time of contract issued. या दोनों जगह, दोनों टाइम पे होना चाहिए? सर ए ऑप्शन। तो A मैं option. इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपके लिए। लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। The time of taking the policy, then claim. समझ लो भाई। In life insurance, insurable interest should exist only while taking the life insurance. In case of property insurance, insurable interest कब होगा बताओ? At the time of claim or at the time of taking the policy? सर दोनों टाइम होगा। दोनों Very time good. कौन बोला? सर वेदांत। Absolutely correct. In marine insurance? एट द टाइम ऑफ at the क्लेम। time of the claim. Yes. If you understand this matrix, any question, इससे चौथा क्वेश्चन नहीं बनाएगा बनाने वाला, अगर इस पे बनाएगा तो। अगर ये मैट्रिक्स समझ में आ गई, और आंसर विल नॉट बी रॉन्ग। वेरी इंटरेस्टिंग। Which of the following is least likely a characteristic of insurance policy? Give me the right answer to this question. Sir, I think so. It's option D. Option D. सर ऑप्शन सी। What is unilateral or what is bilateral? सर यूनिलेटरल सर एक तरफा हो गया सर, और बायलेटरल सर मतलब दोनों साइड से। अब सुनो मेरी बात शांति से। In insurance, all the power remained with insurance company. Insurance company decides what will be your coverage and the conditions. Can you bargain with your insurance company? No, I want this, I want this. Whatever the premium you pay, accordingly insurance company gives you coverage. So who has the power while drafting the contract? बोलो, आपके पास power है, insurance company के पास power है? इंश्योरेंस कंपनी। Insurance company. So insurance contract are never a bilateral contract. They are basically a unilateral contract in which the power is given by to whom? Insurance companies. And that is basically nothing but it is adhesion. Contract of adhesion says that there is a power of in a contract with one party. An insurance में वो party कौन है? Insurance company. Company. So insurance is always a unilateral contract. $75,000. Anybody who has a confusion in this answer? Answer is absolutely correct. बोलिए. 75. He can take till the maximum of 25,000 here and can maximum of 50,000 here. Isn't it? 75. ठीक है.